Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Mustafa bhai. Assalamu alaikum to all the brothers. Okay, so the book which just to give you a recap कि अब तक हम लोग the awaited savior के three questions हम लोग आंसर कर दिए about the वजूद of इमाम ज़माना अलैहि सलाम. ये objections three objections जो थे इमाम ज़माना के उसको आंसर कर दिए. This is the fourth question as we are just going further. एक क्वेश्चन जो पीपल के दिमागों में आता है, लोगों के दिमागों में आता है, रीजन फॉर हिज कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस. व्हाट इज द रीजन फॉर हिज कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस? लाइक हाउ इज इट पॉसिबल कि इमाम ज़माना का शिया जो है जो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, हाउ डू यू काइंड ऑफ प्रैक्टिकली लोगों को कैसे समझाए कि यस इमाम ज़माना का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट अ थियोरेटिकल और इट्स नॉट समथिंग एक हैपहज़ार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, एक रियल कॉन्सेप्ट है. तो इस बुक में जैसे द अवेटेड सेवियर इज रिटन बाय आयतुल्लाह मुर्तज़ा मुताहरी एंड शहीद बाखर सदर, ब्यूटीफुली उन्होंने ये क्वेश्चन को भी आंसर करे. दे आर टेकिंग दिस क्वेश्चन by answering it in two different ways, right? Considering the scientific version of it and then the riwayati version, the theoretical version of it. So let's proceed with it. Yeah, so now we come to the fourth question. यहाँ पे ही इज ट्राइंग टू से दैट थियोरेटिकली भी अगर लोग मान ले इमाम ज़माना एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट हाउ जस्ट द फैक्ट दैट दिस कॉन्सेप्ट ये है, इसको कैसे हम प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बोल रहे हैं कि just if we just go by the number of hadiths we have upon the wujud of Imam Zamana, like only with the Sunnis there are about the number of reports on this subject found in the books of our Sunni brethren comes to around 400, and the total number of report that comes within Shia and Sunni sources is like 6,000. So this is which such a huge number. ये बोल रहे हैं कि this is a colossal figure, unparalleled in case of most of the Islamic issues. बहुत सारे Islamic issues जो हमें usually as a Muslims doubt नहीं करते, उसमें भी आपको इतना बैकग्राउंड और इतना इतने सारे रिपोर्ट्स नहीं रहते जितने इस पर्टिकुलर इशू पे ही बोलते हैं. Okay, going forward he says that as an embodiment of this concept, okay, there exist enough justifications, one being Islamic and the other being scientific, and both of them will be addressed as a part of defending this argument and providing justifications for it. तो यहाँ पे अगर आप गोइंग फॉरवर्ड ना थोड़े ऐसे हदीसेस जो हम लोग कॉमनली सुनते रहते हैं, लाइक सी it says that बहुत सारे hadith हैं have come down from the holy prophet and from the Imam alayhi salam. They specify that Mahdi alayhi salam will belong to prophet's house and will be a descendant of the Fatima Zahra salam alayha, and will be the ninth generation descendant of Imam Hussain alayhi salam. Imam Hussain के बाद Imam Zainul Abidin और ninth descendant रहेंगे बोल के. और गोइंग फॉरवर्ड ना ये भी एक फेमस हदीस है कि the total number of caliphs after me will be 12 बोल के आई थिंक सही बुखारी में भी है, अहले सुन्नत के बहुत सारे किताबों में है ये. So these traditions give a specific shape to a general idea of Imam Mahdi. अब तक हमें स्टार्टिंग में भी जैसे we have spoken that एक जनरल आइडिया रहता है इमाम महदी आएंगे, एक सेवियर आएंगे, बट ये इट गिव्स अ स्पेसिफिक रूट मैप आपको डेवलप करके बता देता. The number of traditions are very large in spite of the fact imams जो हमारे imams थे वो बहुत reserved थे इस subject के ऊपर, खुल के बताते नहीं थे about Imam Mahdi because of the fear of the attempt of life. Because आपको पता है कि 11th imam हमारे house arrest में थे and all that ना, उस object से डर के या चौकन्ना रह के careful रह के they were very reserved. Still in spite of this there were a lot of hadiths बोल के बोल रहे हैं. तो यहाँ पे going forward again, the total number of reports about this saying, right? See, according to different versions of the Holy Prophet, this is a very famous hadith जो मैं आपको पहले ही बोला था that he will be succeeded by 12 caliphs, by 12 imams or by 12 commanders बोल के एक hadith है. So the total number of reports about this saying exceeds 270. The total number of reports they are found in the most celebrated Shia and Sunni books. Sunni book में से बोले सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही तिरमिजी, सुनन अबू दाऊद, बहुत सारे all the top books. It should be noted that सही बुखारी के जो लेखक है बुखारी, he was a contemporary इमाम 9th इमाम, 10th इमाम और 11th इमाम के जमाने के कंटेम्पररी हैं. तो उन्होंने उनके बुक में आपको ये कॉन्सेप्ट, ये बात नोट करके हैं. So this fact has a great significance, for it proves that the tradition was recorded before the contents could materialize. ये एक important logical point बोल रहे हैं यहाँ पे the author of this book. बोल रहे हैं कि अगर 12 इमामा होने के बाद अगर ये हदीस अगर आती बुक्स में कि that they will be 12 followers after the holy prophet, then
you can doubt it, but 12 इमाम कंप्लीट होने के पहले जब आपको रसूल खुदा की तरफ से आ गया कि मेरे बाद 12 कैलिफ्स रहेंगे, देन उसकी जेन्युइननेस के ऊपर नहीं, इट हैज अ वेरी, इट इज वेरी, इट्स वेरी सॉलिड इन टर्म्स ऑफ जेन्युइननेस. तो गोइंग फॉरवर्ड इट गोज, इट्स ए सी. यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो, सो लॉन्ग एज वी पोजेस मटेरियल एविडेंस, एक हमारे पास एविडेंस है कि 12 इमाम होने के पहले हदीस आ गई हमारे पास. So long as we possess material evidence of the fact that the tradition was recorded before the number of imams were actually completed, we can safely say that this is not a reflection, that it is not a reflection on an accomplished fact, right? It is a divine truth. Okay, bol rahe hain. A imam will begin from Imam Ali and it will end with Imam Mahdi. So this was like the Islamic, Islamic proofs to prove that the argument is not a fantasy, but it is truthful as per the author. So going forward, scientific argument भेज रहे हैं. साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट क्या है इमाम का कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस के बारे में? द साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट जो हम बात कर रहे हैं कि द रीजन फॉर हिज कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, द क्वेश्चन व्हिच वी आर ट्राइंग टू आंसर. इसका साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट ये है कि कभी भी एक कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, इफ इट हैज टू गो ऑन, और उसके ऊपर एक माइनर अकल्टेशन, एक अकल्टेशन है, बिकॉज इमाम इज नॉट करंटली अवेलेबल, सो दैट हैज टू गो ऑन इन स्टेजेस. ऐसे सडनली लाके जो उम्मत को है शॉक नहीं दे सकते हम, राइट? So what he's trying to say here is, see, 70 years तक, बोल रहे हैं कि जो गैबत सुगरा थी, तो minor occultation है, it went for about 70 years. He's giving a little bit, explanation of minor occultation, which is interesting to hear. मैं जो next 2-3 minutes में ये दो concepts बोल के आपको समझा देता हूँ इंशाल्लाह. The minor occultation represents the first stage of imamat of the awaited savior. He basically, he was just trying to keep himself physically absent from the public scene. तो ये अपने आप को physically absent रख दिए, but he used to still take an intelligent interest in what is happening around him. See, अगर ये minor occultation नहीं रहता, तो it would have been a great shock to his supporters, or they had always been accustomed to always be in contact with the imam and to consult with him on the divergent problem. जब भी कोई problem होता था दूसरे इमामों के ज़माने में, they used to try to go and reach to the imam directly, right? Or at least know that imam hai, we can always reach the imam even if it was through his representative. But ये minor occultation के अंदर इमाम क्या करते थे, अपने को physically absent रखते थे, just to give this the people some sort of a net practice that this is something different is going to happen बोल के. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वही कि उनका sudden disappearance, अगर वो minor occultation नहीं रहता तो whole organization destroy हो सकती थी, उनका जो, because people would have been cut off from spiritual and intellectual leadership बोल के बोल रहे हैं. So this was a necessary preparatory stage to precede the final occultation. Minor occultation की जरा specifics में जा रहे हैं, right? The stage of minor occultation where Imam disappeared from public scene but maintained contact with his followers through certain representatives. ये 4 representatives के जरिए से he was in contact with the people and he served as an imam, played his role as an imam. ये उस्मान इब्न सईद अल अमरवी, मोहम्मद इब्न उस्मान अमरवी, अबुल कासिम हुसैन इब्न रूह, अबुल हसन अली ibn Muhammad al-Simari. These were the 4 people. So these vicegerents were there, they were in contact with the Shia. Okay, ये लोग क्या करते थे, ये जो इमाम के जो उम्मत की क्वेश्चंस है वो इमाम तक लेके जाते थे, and Imam used to submit his replies, used to convey his replies back. वो ये बोल रहे हैं कि इमाम, ये जो 4 वाइसजेरांस थे, जो 4 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे लास्टेड फॉर अबाउट 70 years. एंड जब भी रिस्पॉन्स लेके आते थे, मोस्टली आपको रिटर्न रिस्पॉन्स लेके आते थे, समटाइम्स वर्बल, जो इसे यहाँ पे लिखा है, ओकेजनली वर्बल. But the fact is that they were in the same handwriting and in the same style and bore the same signature, right? Or then Al-Simri, who was the last vicegerent, he said that okay, अभी ये जो ग़ैबत सुग़रा खत्म हो रहा है, and then अभी ग़ैबत कुबरा शुरू होगा. So that ऐसा करने से Shias had gradually adapted. जब उनको लगा कि Shias have gradually adapted to the absence of the Imam बोल के बोल रहे हैं. Okay, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसके बाद क्या होता है, ग़ैबत कुबरा में क्या होगा, क्या होता है कि अभी like not in touch with our Imam and stuff like that, वैसा नहीं होता है. In ग़ैबत कुबरा, what happens is, instead of specifically appointed vicegerents, Imam is now represented by general way by qualified mujtahids, जो faqih होते हैं, right, who have deep insight in both spiritual and temporal affairs. Okay, now in light of the foregoing, it can be easily inferred that the existence of Imam Mahdi. अब ये सब जो concept है, इससे हम ये prove कर सकते हैं कि Imam Mahdi का existence is a fact because it has been experienced by a large number of people.
70 ईयर्स का तो हमारे पास एक उनके जो गैबत सुगरा का एक सिस्टम है, एक सेटअप है। और द फैक्ट दैट इज नो वन ऑब्जर्व्ड इनकंसिस्टेंसी उस 70 ईयर्स में, कोई भी आपको इनकंसिस्टेंसी ऑब्जर्व नहीं करे, कोई भी एक, देयर वाज नेवर डिस्कवर्ड एनी साइंस ऑफ डिसेप्शंस, देयर वाज नो फ्रॉड। ये चार लोग हैं जो कंटिन्यू करे, कुछ भी सस्पिशन नहीं सो करे, ये चार लोगों के बीच में कोई स्पेशल लिंक नहीं था, और नो कोल्यूशन बिटवीन देम, राइट। ये चार लोग अलग अलग टाइप के लोग थे, राइट। देयर कंडक्ट वाज अबव रिप्रोच, दे गेन कॉन्फिडेंट ऑफ ऑल पीपल। ये चार लोग आपको खुद सिस्टम सिस्टम सेटअप करे और लोगों को उनके क्लेम के जेन्युइननेस के बीच में लेके आए बोल के। यहाँ पे फाइनली लेट मी फिनिश इट ऑफ। क्या बोल रहे हैं कि कभी भी याद रखो, हक जो है वो कैसे भी अपने आप को जाहिर करके रहेगा बोल के, एक ओल्ड प्रॉवर्ब है बोल के बोल रहे हैं। एंड इवेंट्स इन प्रैक्टिकल लाइफ, कोई भी एक फ्रॉड आप 70 साल तक नहीं छुपा सकते हैं, लाइक इट्स ऑलवेज इजी फॉर द फॉल्सहुड टू कम आउट बोल के बोल रहे हैं। सो फाइनली वी कंक्लूड सेइंग दैट thus we know the minor occultation is tantamount to a scientific experiment. So जो गैबत सुगरा था वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था to prove the facts that the awaited savior, उनकी उनकी बर्थ, उनकी लाइफ, उनका occultation, general program and his proclamation for the गैबत सुगरा, ये सब एक फैक्ट बोल के बोल रहे हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर दैट। बहुत शुक्रिया।